जयधारी माँ। हर जीवन अनेक प्रकार के रंगों से भरा हुआ है। बातचीत वही रंग बांटेगी आप सबके साथ। हम सब एक हैं, बस सोच अलग अलग है। बटोर लीजिए उन रंगों को, जो भी आप चाहें इस बातचीत से, और ढाल लीजिए अपनी सोच में। यही मकसद है इस बातचीत का। आइए मिलते हैं अपने प्यारे से मेहमान से। अतिथि देवो भव। जयधारी माँ, हरे कृष्णा। जयधारी माँ, जय माँ। आइए जुड़िए, सब आ जाइए। हम वापस आ गए एक और बातचीत के साथ। गुरु जी कहते हैं कि जो भागवत गीता जी का एक सार है, he says you have limited control over your circumstances but unlimited control over your consciousness. तो आज की बातचीत उसके ऊपर। उससे पहले एक वीडियो देखते हैं, फिर गुरुजी के साथ ढेर सारी बातें। जी आइए। गुरु जी, जयधारी माँ, हरे कृष्णा। प्रणाम टू यू गुरु जी। प्रणाम 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 डॉक्टर किरण, डॉक्टर प्रणाम सेना जी। जी
Pranam Guruji. Guruji, I want to start with something very special. हम चाहेंगे कि आप एक कोई भी मंत्र जो आपको बहुत भाता है आप उसका उच्चारण करें गुरुजी. Then there's a question coming to our heart. जी. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रणाम. जी. जी गुरुजी. Thank you. गुरुजी. जी. गुरुजी, share that very special moment with us. That very special moment when you went to Maharajji, when you went to your love Maharajji Radhanath Swamiji, and you said you wanted to go to America, and Maharajji spoke about your journey, about yoga and Bhog. Let's go back to that moment. Ji. Yeah, I had just completed my BTech, or was in the process of completing, and I came to Maharaj and asked that now that I have given my GRE exam and I have my scores, so I can start applying to various universities, and I can assist in ISKCON's mission in America, also in the colleges. So at that point of time, I was thinking Maharaj will tell me that, okay, that is a good idea, and you can come there, and ISKCON needs you there. But rather he said, you know, looked at me very gravely into my eyes and said, if you're looking for sense gratification or bhoga, you go to America, and if you're looking for spiritual progress, you stay in India. So uh, I was quite struck by the openness and the honesty with which he spoke that to me directly. And that was also a turning moment, because I have had already thought about staying back, but still, because this plan was for a long time, it's not so easy to change a plan which you have been thinking about. So sometimes you need a gentle push from someone to confirm that the U-turn you are planning is in the right direction. So Maharaj is a person who never forces anything on anyone, and so he kind of could see that I'm quite inclined to pursue my passion as a monk, but not mustering enough courage to bring that to my words. So he kind of supported in that way. जी. मम्मी, आप Yes. पूछेंगे? मैं अच्छा मैं I met the monk. I met Swamiji when he visited me with Maharaj Radhanathji in Pondicherry. जी. And Yes. that time I did not know how deep you were in spirituality. I did not know that. Swamiji, my ignorance. No, But no, I no, met no. you, you were always there with him. But I did not know that. And it's destiny and fate that is making us meet today. Yes. Absolutely. You have also visited the Govardhan Eco Village, ma'am, when you Yes, came for yes, the that's fantastic. conference. Yes, I did. And in fact, there is a cow and a calf in the name of Sina. Absolutely.
Maharaji named a cow and a calf in name a bridge and your father, my husband, bridge, and also in Saina's name. Yes, that's right. That's right. It's That was Maharaji named yes, that in was the eco village which I visited. But I Absolutely. did not know one day I will meet Swamiji like this on Demonstrative Learning channel as a Baatcheet program. And thanks to Saina that it's happened. Well, life is always full of surprises, ma'am. Yes, yes, Swamiji. Yes. गुरुजी, आप इतनी सरलता से इतना कुछ कर देते हैं. How do you do it? इतनी सरलता से कितना कुछ करते हैं. The entire administration, your travel, your practice, your prayer, Your holding writing. yourself, your writing, इतनी सरलता से कर देते हैं. You write so much. You write so much. Look at your books. Fantastic books. अरे, किरण बेदी मैम के सामने तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं. वो तो Nay, पूरा देश nay. को चला रहे थे. What treasures you have. Every day you write. You write a story every day. Every day, Swamiji. Every Thank you. day. In fact, I remember the first time I saw you, Dr. Kiran, was I was visiting with my family the Asian Games in 1983. And the reason I remember is I had never ever seen a police person lady. So I saw you. You were, giving orders to someone outside Jawaharlal Nehru Stadium, and I asked my sister who used to study in Ames, "Hey, who's this? This is a police, but it's a woman. It's a lady." And then she said, "No, this is the so and so and taking care of the entire operations and this and that." So usually you don't remember things which are so far back, but that was a very special incident because I never thought that you also have women police folk in those days. It was something new for me. So I remember that. So well, coming back to Saina's question, देखिए इस जीवन में भगवान ने हर एक को विविध प्रकार के कलाएं और गुण दिए हैं. हम लोग सभी भगवान के निमित्त हैं. निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन. कृष्ण ने अर्जुन को नाम दिया सव्यसाची. सव्यसाची का अर्थ है, इंग्लिश में कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से जो चला सके. वन वॉज एक्सपर्ट इन शूटिंग एरोज विथ हिज राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड. तो अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर थे, अर्जुन इतने बड़े विद्वान थे. अर्जुन का एक नाम धनंजय था. अर्जुन को इंद्रदेव स्वर्ग में लेके जाते थे अपने कई प्रकार के संरक्षण के कार्य के लिए. जैसे आजकल भारत से H1B पे लोगों को लेके जाते हैं, वैसे अर्जुन को स्वर्ग लोक में लेके जाते थे. तो इतना सब होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने सभी पांडवों के साथ एक समान व्यवहार किया, आदान प्रदान किया, क्योंकि उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को धर्म का प्रतीक बनाया, भीमसेन को बल का प्रतीक बनाया, अर्जुन को धनुर्धरधारी उसमें उनको निपुण बनाया, नकुल और सहदेव को स्वामी भक्ति में उन्होंने निपुण बनाया. तो इसलिए हम लोग सभी इस बात को हमेशा याद रखें कि हम अपने बल पर, अपने शक्ति पर कुछ नहीं कर सकते. जब अर्जुन श्री कृष्ण को मिलने द्वारका गए अंत में, और तभी कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, युधिष्ठिर महाराज को राजा नियुक्त कर दिया था, कृष्ण वापस द्वारका चले गए थे, लेकिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विरह में तड़प रहे थे. तो वो गए कृष्ण को मिलने, और जब गए तो पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं समाप्त कर दी. और तब वही अर्जुन जब लौट के आ रहे थे
तब कृष्ण की 16,108 पटरानियों को साथ में लेके आ रहे थे, उनका संरक्षण करते हुए। अर्जुन वाज प्रोटेक्टिंग दोज क्वींस। और जब ब्रज के आसपास वो आए, ऑन द वे टू हस्तिनापुर, तब अचानक वही भगवान श्री कृष्ण ने एक सामान्य शिकारी का रूप धारण कर लिया और सामान्य अस्त्रों से उन्होंने अर्जुन पर आक्रमण किया। और अर्जुन को लगा मैं तो धनुर्धर हूं, मैं तो गांडीवधारी हूं, आज तक कभी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। और उस दिन उस मामूली से शिकारी ने बिल्कुल सामान्य अस्त्रों से अर्जुन को पराजित कर दिया, क्योंकि वो सामान्य शिकारी नहीं थे, कृष्ण ही थे, अलग रूप धारण करके, लेकिन अर्जुन को नम्र बना। और तब अर्जुन पराजित होकर, नम्र होकर युधिष्ठिर महाराज के पास आके कहते हैं, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे अपहृतम तेजो देव विस्मापनम महत्। अरे युधिष्ठिर महाराज, आप मुझे देख के सोच रहे हैं कि मैं मायूस क्यों हूं, लेकिन मेरी मायूसी का कारण ये है कि वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे अपहृतम तेजो, मेरा जो तेज था, मेरी जो शक्ति थी, मेरी ताकत थी, माय पावर, माय इन्फ्लुएंस, माय रेपुटेशन, माय एक्सपर्टीज, माय स्किल, मेरी निपुणता, ये सभी तेजो अपहृतम, मेरे तेज को अपहरण कर लिया गया है। आई हैव लॉस्ट माय पावर। वंचितो अहम महाराजा, मैं उससे वंचित हो गया है युधिष्ठिर महाराज। क्यों? हरिणा बंधु रूपिणा, जो मेरे प्रिय बंधु हरि थे, भगवान श्री कृष्ण थे, जिस क्षण इस धरती से निकलकर गोलोक धाम अपने धाम चले गए, देव विस्मापनम महत्, मेरा वो तेज, मेरी वो शक्ति जिसको देखकर बड़े बड़े देवता गण भी कंपित हो जाते थे, वो मेरी सारी शक्ति ऐसा प्रतीत हो रहा है क्षण भर में समाप्त हो गया। अर्थात मैं ये समझ सकता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे वो शक्तियां धर्म के रक्षण के लिए दी थी। अब क्योंकि वो धर्म का कार्य समाप्त हो चुका, इसलिए उन शक्तियों को भगवान ने ले लिया। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि, सारी प्रकृति के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं, जैसे कठपुतली रस्सियों के अंतर्गत नाचती हैं, लेकिन उस कठपुतली को नाचते हुए देखकर धागा नहीं दिखता और धागा के ऊपर उंगलियां नहीं दिखती, उंगलियों के पीछे का व्यक्ति नहीं दिखता, वैसे नाचती हुई कठपुतली को लगे कि मैं ही नाच रही हूं, तो उसको कहते हैं भ्रम। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति। इसीलिए भगवान ने जो कुछ भी सामर्थ्य दिया है, हम लोग सभी समाज में अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। कोई उद्योगपति, कोई पॉलिटिशियन या राजनेता, कोई स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जो भी हो, सब अपने अपने सामर्थ्यानुसार योगदान दे रहे हैं। और जब हम देखते हैं कि ये योगदान जो हम दे रहे हैं वो मेरा योगदान नहीं, मैं तो केवल दर्पण हूं जो भगवान की शक्ति का प्रतिबिंब कर रहा है। आई एम सिंपली रिफ्लेक्टिंग द लॉर्ड्स एनर्जी। यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमत् ऊर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभव। कृष्ण गीता में कहते हैं, अरे दूसरों के प्रगति को, दूसरों की सफलता को, दूसरों की कलाओं को देखकर द्वेष मत करना कभी, क्योंकि जो कोई भी इस जगत में शक्तियां आपको दिखती हैं हे अर्जुन, वो सब मेरी ही शक्तियां हैं।
जो मैंने अलग अलग लोगों के अंदर विभिन्न समयों पर बांट दिया है. It is my power which I have distributed to different people at different times. So therefore, success, pride in success and moroseness in defeat, both are illusory, because the cause behind anyone's success and the cause behind any defeat is ultimately Krishna's will. Hare Krishna. Wow. जय हरे माँ, हरे Hare कृष्णा Krishna. जी। Hare Krishna. How does गुरुजी, one realize this, Swamiji? How does one realize what you're saying? How does an ordinary lay person get to realize this? Because I know the realization brings the change. How do you connect? How do you realize for a common man? Excellent question, Dr. Kiran. I give my standard formula answer for this, called ABCD. The process for realization is ABCD. What is A? A stands for association. Association of like-minded people जो अपने आप को सुधारना चाहते हैं, आध्यात्म में उतरना चाहते हैं, ऐसे लोगों की संगति आप करेंगे. जैसे आपने जब आईपीएस का एग्जाम दिया होगा तो कई लोगों के साथ आप मिलते जुलते होंगे जो उसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे. कोई व्यक्ति अगर बिजनेसमैन बनना चाहता है तो अलग अलग सीआईआई, फिक्की और ऐसे कई जो बिजनेस कंसोर्शियम्स के साथ वो संग करते हैं. जो जिस प्रकार का हम लक्ष्य निर्धारित करें उसी लक्ष्य वाले लोगों के साथ संग करें तो प्रगति तीव्र होती है, तेज होती है. तो सबसे पहले इसको कहते हैं एसोसिएशन. संस्कृत में इसे कहते हैं सत्संग. सत्संगात मुक्त दुस्संगो हातुम न उत्सहते बुधाः कीर्तिमानो यशो यस्य सकृत आकर्ण्य रोचनम. जब सत्संग जीवन में आता है तो कुसंग अपने आप निकल जाता है. Very good. एक उदाहरण देते हैं. एक धूल का कण, एक धूल का कण जब जल के संपर्क में आता है, जल का संग करता है तो वो धूल का कण कीचड़ बनता है, लोगों के पैरों तले कुचला जाता है. वही धूल का कण जब वायु के संपर्क में आता है तो उछल के ऊपर जाकर वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर सकता है. तो इसलिए धूल का कण तो सामान्य है, न्यूट्रल है, लेकिन जल का संग करे तो उसका परिणाम दूसरा होगा और वायु का संग करे तो उसका परिणाम दूसरा होगा. और डॉक्टर किरण, जब आप जेल वगैरह देखते थे तो आपने देखा होगा कि लोग कई बार जो क्राइम करते हैं वो संग के कारण आदतें बिगड़कर, चेतना बिगड़कर ये हो जाता है. तो इसलिए एसोसिएशन अर्थात संग. दूसरा बी, बी फॉर बुक्स. बुक्स का अर्थ क्या है? ग्रंथ. तो ग्रंथों में आते हैं भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम. तो इनकी विशेषता क्या है? इन ग्रंथों के अंदर हमें बताया गया है कि हमारे जीवन में 5 महत्वपूर्ण तत्व हैं. अगर मैं अपने आप को जीव मानूं, जीवात्मा, तो जीव, प्रकृति जो कि नेचर, काल अर्थात टाइम और कर्म, तो ये 4 हो गए. जब जीव प्रकृति का शोषण करने का प्रयास करे, काल का उपयोग करते हुए और कर्म करे, when the soul tries to exploit nature under the influence of time and engages in activities, उसे कहते हैं भगवत गीता में भोगा. भोग और एंजॉयमेंट, एक्सप्लॉयटेशन. और भोग का परिणाम होता है, अनुभव होता है, द एक्सपीरियंस ऑफ भोगा इज
चिंता, चिंता और एंजाइटी, चिंताम अपरिमेयाम च, और तत्, जब जीव चिंता में आता है तो सोचने लगता है, और इस तरह की बातचीत के कार्यक्रम वगैरह को देखकर व्यक्ति विचार करने लगते हैं कि मैं इस प्रकार की चिंता की परिस्थिति में कैसे पड़ा और मैं इस चिंता से कैसे निकल सकता हूँ। और जब उसके मन में इस तरह का विचार आता है तब वो सत्संग में आकर प्रश्न पूछने लगता है। तो सत्संग में वो गीता का ज्ञान सुनता है और प्रवचनकार, कथाकार, शिक्षक या स्वयं ग्रंथ गीता जब वो पढ़े तो उसको समझ में आता है कि मैं अभी तक जो गेम खेल रहा था वो प्रकृति, काल और कर्म के साथ खेलते हुए मुझे लग रहा था कि मैं ही हीरो हूं, लेकिन गीता को पढ़ के उसको समझ में आता है कि वास्तव में मैं इस प्रकृति का मालिक नहीं जैसा मुझे लग रहा था, मैं तो केवल प्रकृति का टेनेंट हूं, असली लैंडलॉर्ड तो दूसरा है, असली मालिक दूसरा है। और फिर जब उसकी दृष्टि ऊपर जाती है तो उसको दिखाया जाता है कौन? ईश्वर। तो आज धर्म के नाम पर विश्व भर में कई प्रकार के मतभेद, कलह, हर प्रकार के जो दुष्परिणाम हो रहे हैं, क्योंकि इसी ईश्वर को जब भिन्न भिन्न उपाधियों के साथ, नामों के साथ, तत्वों के साथ जब प्रदर्शित किया जाता है तो फिर वो लोगों के बीच कलह का कारण बनता है। तो अभी के लिए उन्हें केवल ईश्वर कहते हैं, क्योंकि भगवत गीता में ये 5 ही विषय हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। जैसे अगर आपको प्रशासन करना है तो उसके कुछ बेसिक पैराडाइम्स होते हैं, अगर आपको कुकिंग करना है और छौंक मारना है तो उसके छौंक मारने के कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स वही चलते हैं मैक्सिमम। वैसे ही पूरे भगवत गीता में यही 5 तत्व हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो जब जीव प्रकृति, काल और कर्म के ऊपर अपना सत्ता जमाने का प्रयास करे और उसको लगे ये प्रकृति मेरी संपत्ति है, ये घर मेरा है, तो उसको कहते हैं भोग, और उसका अनुभव है चिंता। जब उसको बताया जाता है कि तू मालिक नहीं है, ईश्वर प्रकृति का मालिक है, तू केवल यहाँ पर चौकीदार है, टेनेंट है, तब फिर उसको लगता है कि चलो भाई, अब मुझे मालिक को रेंट देना चाहिए। जब जीव मालिक को स्वीकार करे, ईश्वर को स्वीकार करके उसको जब रेंट देने का प्रोसेस स्टार्ट करे, तो जब रेंटल एग्रीमेंट साइन करते हैं जीव और ईश्वर के बीच में, उसको कहते हैं योगा। योगा का अर्थ क्या है? योगा का अर्थ है जब जीव और भगवान का मिलन हो, अर्थात जीव भगवान को स्वीकार करे। The tenant has to first accept the landlord, and all of you know, so many property disputes happen all over because there is a dispute between the owner and the tenant. And therefore, yoga is nothing but acceptance of the Lord as the owner of Prakriti, the controller of Prakriti or nature. And the Jiva accepts that I am simply a part and parcel. Both the nature and me are energies of the Lord, and I am not the enjoyer, but I am supposed to be only the trustee. So therefore, जब इस प्रकार का परिस्थिति आती है, तो जब योग में लगता है जीव, तब उसके अनुभव को कहते हैं चिंतन। तो ये चिंता बन जाता है चिंतन। इस तरह से। तो ये है बी फॉर भगवत गीता। Right. तो सी स्टैंड्स फॉर कंटेम्पलेशन।
कंटेम्पलेशन में कह रहा हूं क्योंकि योग में अलग अलग प्रकार के भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो मार्ग हैं, तो बी मतलब बुक्स के माध्यम से पता पड़ता है क्या करना है और कैसे करना है, और सी मतलब हम एक्चुअल में उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करें। तो ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, तो ये सब जब अपने जीवन में हम कंटेम्पलेशन की परिस्थिति आरंभ करते हैं, उसको कहते हैं सी फॉर कंटेम्पलेशन। और इस्कॉन में हम लोग सी को बोलते हैं चैंटिंग, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस तरह से। Wonderful. और तब जाकर डी को कहते हैं डाइट, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और अगर हमको तमोगुणी स्वभाव मन में उत्पन्न करना है तो तमोगुणी भोजन उपयुक्त होगा, रजोगुणी स्वभाव चाहिए तो रजोगुणी भोजन, लेकिन मन में सत्वगुण प्रदान करना हो तो भोजन भी सत्वगुण में होना चाहिए। तो इस तरह से ये है ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक, सी फॉर कंटेम्पलेशन एंड डी फॉर डाइट। कितना भला होगा जो भी सुनेंगे इसको आज, कितना इजी कर दिया, ABCD नहीं बोलने वाला कोई। थैंक यू। यस साइना। जी गुरुजी, थोड़ा आप बताएंगे ऑल द वर्क दैट यू आर डूइंग with the IIT alumni, your IIT alumni, that's such a fascinating aspect of your life and your day, and you have created, आप एक NGO का भी हिस्सा है which all the IIT alumni have created, and there's so much of productive work that you all are doing together. जी गुरुजी। So how do you do it? Question is how. यस, उसके बाद जी जी। हाँ, तो बेसिकली जो IIT डैश IIT करके जो एक तैयार किया है सुंदर प्लेटफॉर्म, उसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से 5 श्रेणी में काम कर रहे हैं। वो है W which is for water, H for health care, और जब हेल्थ केयर के साथ एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, लाइवलीहुड्स, और ये सब हम लोग कर रहे हैं। और मुख्य रूप से हम लोग चाह रहे हैं कि सोशल इम्पैक्ट प्रोग्राम्स जो हम कर रहे हों उसको हम एक नेशनल लेवल पे लेके जाएं। तो जैसे पानी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, रेस्टोरिंग द प्रॉमिस ऑफ वाटर। फिर हेल्थ केयर में ब्लाइंडनेस के लिए हम लोग कई जगह काम कर रहे हैं, और वास्तव में बहुत सारे अच्छे अच्छे NGOs हैं जो काम कर रहे हैं, जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन कई बार उनको स्केलिंग अप में कष्ट होता है, कनेक्शंस में कष्ट होता है। तो रूरल ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी स्केलिंग अप में लगता है वो IITians अपने कॉन्टैक्ट से और अपने इन्फ्लुएंस से, फंडिंग से उसको व्यवस्था करवाते हैं। तो वास्तव में पूरे विश्व में अगर देखा जाए the whole world can be divided into 2 divisions. 8 billion population of the world is 2 billion are the only ones who actually have disposable income, and almost 6 billion do not have disposable income. They are underprivileged. So therefore 300 million people across the world are experiencing stress and anxiety symptoms, because it's mainly because they are all trying and aspiring to be within these 2 billion and looking at each other. Just like in the district of Palghar where I come from, the population of almost 3 million has an annual income of only 27,000 rupees per capita per annum. So we have established a program called Atmanirbhar Palghar. Through that we are trying to establish innovation in education by intervening in ashram shala schools,
We are also helping people through enabling them in skill. We are very much focused on working with thousands of farmers to help them grow their food in an organic manner using cow dung and cow urine fertilizers. And we also handhold them so that they get confidence to be able to do that kind of farming. And along with that, we are also empowering women, and just like Madam is also doing, and a lot of women empowerment programs are centered around healthcare and self-help groups. And many of these self-help groups are creating various products, and we help in providing the forward market linkage in Mumbai and other places. So basically, if the 2 billion in the world look at the remaining 6 billion as their responsibility, I think the whole world will be transformed overnight. जी Swamiji, I am also an IITian, so basically from the background of an IIT. IITians are spread all over the world and they're all falling into this 2 billion population. All. If we can have a movement of alumni association of the IIT, each one, what does he or she give as an alumni to the area and the vicinity wherever they are? It will be very, very transformative. IIT could be a movement worldwide because all IITians are the have-nots, haves, if they can work out. I think that could be another movement. If every IITian declares what is it they can do, because each IITian has studied at a very low cost. All of us IITians hardly paid any fee when we studied and did the IIT. I remember it was low cost because it was all government support subsidized. That could be another movement. Each IIT declares as an alumni association. What do you think about it? Because you are at the right place. How about taking this forward from that? Every IIT declare either individually or collectively. I think it's a great idea, and I would say that not just IIT, but every Ivy League institution and graduates from those institutions Aspily. who are, in privileged positions, if they take it up as their responsibility, definitely the world will change. But the main issue here is that it cannot be legislated, and we can only inspire. And I believe that currently there is a Pan IIT Global Association, Pan IIT Global Alumni Association, and I am happy to share with you that the Pan IIT uh, Global Alumni Association is running the equivalent of an IIT in the skill development space, and that is known as PARFI. And they are doing excellent intervention. It is led by one of the IITians only, and he dedicated his life just after his BTech, after working 3 4 years in corporate since 2009, and he's engaged in this. And many established IITians are supporting this. So the prominent intervention they are doing is in Jharkhand, where they have established a special purpose vehicle um, in a collaboration with the government of Jharkhand, and they are establishing many skill development centers all across, with the model that all the uh, students who enroll in that, they kind of pay a fee which is taken as a loan from a bank, and the bank is happy to give the loan because of the SPV which has been created with the government. And as soon as the person passes out from his skill development center, he gets placed, and then he starts actually paying back. And so far they have a very excellent record of payback from the passed out students, and it's now moving to other states also beyond Jharkhand, but they make it a point that they start from those states which have the lowest income levels. So that's one example of
the power of IITians harnessed. And Yes. the other one is started, which was inspired by Dr. APJ Abdul Kalam, and that's known as wheels: water, health, education, entrepreneurship, Environment. livelihood, skill, like that. So that's another group of IITians come together, and the other one is the IIT dash IIT. So I think there are many such initiatives which I am aware of, and there may be many more I'm not aware of. But yes, what you're saying is right, that at our level, what each one of us can do to share this message would be extremely crucial, because as it is said, that life is too precious to be wasted in repeated post-mortems, because we can't delete our memories, but we can choose what we want to remember. Yeah. And in the war of egos, the winner is the biggest loser, and therefore those who commit to nothing, they will be distracted by everything. So if the group of IITians commit to transforming society, then definitely it will have a very transformative effect. जी, Swamiji, one of the quickest method could be, I'm just giving you an idea, you can carry it forward as you do, as you can wherever you are, is every student moment he enrolls into IIT, he commits alongside with a cause. And the 4 or 5 years he does, he continues to offer his time for a cause. Here he's giving time and energy, not money, because that's also giving. When you give time, that's most precious. So if we put it as a curriculum, as a part of the education policy of IIT, where every director, it's a policy. Every IIT enroll yourself. What will you volunteer while you're doing your studies? Does that mean the student is becoming sanskari and a satsang? He's creating a satsang. He's creating a satsang, and he is linked himself with the nearest cause, back to his own school village, back to his own rural areas, back to a nearby neighborhood cause programs. So if every student, when he enrolls, you can see the kind of revolution from the bottom up. It's like a bottom up rather than only becoming when he is already a company man on a CSR or corporate social responsibility or internship or an apprenticeship. He begins with a cause. It's like when we joined college, we'd say NCC में जाना है मुझे as a cadet. But it's optional subject. But optional subject of volunteering, community giving, may be another idea you can promote as an IIT and on the board or as an alumni association. It's an interesting idea, ma'am. But my observation is, when I compare with the equivalent which is existing in the medical MBBS domain, that after the internship, there is some minimum number of years which the doctor has to spend in rural posting, compulsory. So that is already a policy and that is being executed in the medical domain, but it's not having the effect, because even today the number of doctors in India is only 14 lakhs, out of which 7 lakh are Ayurvedic and naturopathy, and 7 lakh are allopathic. But out of that 7 lakh allopathic, only 1.5 lakh allopathic are in rural India for 80 crore population, and remaining 5.5 lakh is for the 50 crore urban population. So if policy would have inculcated principles and passion, then the government could be so effective. Yeah. But unfortunately, policy by itself doesn't seem to inject passion, inject principles in people. And therefore I'm doubtful whether making a policy like that would be effective, because all these medical students who are doing their internships in rural India are waiting for the day when that ends and they can get out and set up their shop somewhere in urban India. And being in Palghar for so many years, I've also experienced the struggle of retaining very good, committed, doctors in rural. So I think it's a very interesting thought, but it needs a lot more
churning and deliberation, but it has to come from within. Yes, Undoubtedly. yes, Thank you. Guruji, it has to be an inner drive. It has to come from the heart. Within, from It within. has to be a personal mission statement. You can't force honest good work. It has to come from within. But talking about the heart, Guruji, can we please show you your heart? We want to show you a little video clip where we've tried to enter that blessed space. Please, Guruji. Ji, देखिए. Then you'll see Bhagwan Krishna. If you expose his heart, you'll see Lord Krishna. जी. Maharaj Radhanath ji. You'll see that in the heart. आप दिखाएं प्लीज. जी. I Wow. guessed it right. आप तो बहुत जबरदस्त तैयारी करते हैं प्रोग्राम के लिए, हाँ? गुरुजी, आप कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे क्योंकि Yeah, ये आपकी पूरी जर्नी है. जी. I know. I think India as a country is very special because the basic core DNA of India is spirituality at its core. So I feel that with the new education policy and the emphasis on Indian knowledge system and having, you know, uh, s- struggled to share the spiritual knowledge amongst the youth in India for the last 30 years, I seriously feel that some serious interventions in the education system would really help transform the character within the youth. Because today, the biggest crisis the youth is facing is not the crisis of finance or the crisis of opportunities, but it is a crisis of character and self control. So, therefore, I feel that when I see this generation having so many opportunities, we all were part of an India as we were growing up. I say to many of my colleagues when we meet them, now their kids are all in their teens and getting married and stuff like that. So we discussed that we seem to be the last generation which grew up without television, Yeah. and that was the first time in the late 70s, early 80s TV came in, and so it was a different journey where we spent several years undisturbed in the mind by any kind of this kind of electronic distraction. But when we are seeing a generation which is constantly distracted by gadgets and the social media and all of these things, and the effect of that, because see, a person can eat 4 5 rotis, some rice, 2 times a day, and some breakfast. There is a capacity what the body can handle. Similarly, there is a capacity what the mind can handle. The mind cannot handle 6 to 7 hours of online surfing. The mind is not equipped for that. So if people are constantly on the gadget for 6 hours, 7 hours, 8 hours, 5 hours, it's like putting in 60 to 70 or 80 rotis into your body every single day. And after 3 days, when you are taken in a stretcher to the hospital, what's the surprise? Because you have overloaded your body. So just because the images and the sounds coming from the internet are subtle,
doesn't mean that it is not impacting. So all of this is impacting the minds, and when we see that people are struggling like anything, just maintaining their basic mental resilience, losing their mental strength, and you know, when we were growing up, we used to regularly go to the doctor to show our throat, to show our sinuses, you know, some kind of pain we would have, fever. So nowadays, it has become very common for people to go to psychiatrist, even in young age, as they are growing up. So this is not the India where we grew up, and therefore Vedic Sanatan Dharma helps a person remain grounded in things which do not change. Because the more things change, the more you need to embrace things that don't change. And therefore, if you want to ask me what is in my heart, what is in my heart is that the cause of all fear is change, and to prevent that, we need to connect every day with things which do not change. And only three things do not change: the soul doesn't change, Krishna doesn't change, and the relation of soul with Krishna as a sevak servant does not change. So, if this entire country can take spirituality seriously and begin the day with a prayer, because morning meditation and prayer is nothing but a vaccine against the virus of change. And so, if change is like a virus, then meditation, contemplation, and prayer is like the vaccine. And therefore, the more and more youth of this country, especially, rather than saying that I don't see my parents praying, I don't see them praying, I don't see them praying, but the need is for us. So let us take to that very seriously. And each and every one of us needs to take this as one's personal mission. So that's what is in my heart. There is a power cut, it will come in Yeah, 10 seconds. fantastic. But Betty, we will have to let Swamiji जी go because जी he जी promised me that he has an 8 o'clock webinar. जी मैं वही बोलने वाली थी But he's given us a wonderful message. Every family beginning with a prayer, bringing spirituality at home at the grassroots, will help them balance this and bring the ABCD, as he rightly said. Bring the ABCD. That will bring the ABCD to handle Absolutely. this, the television generation, the gadget generation. He's right. You can divide the Indian population or the worldwide now, pre-gadget and post-gadget. Absolutely. So I think he's given us the recipe, he's given us the solution. Saina? जी गुरुजी मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि हाउ डज टुडेज यूथ एम्पावर देमसेल्व्स विद इन हम Yeah, बाहर की तो एम्पावरमेंट की बात करते हैं लेकिन हम इंटरनल एम्पावरमेंट की बात नहीं करते So we can talk absolutely. about this as the last question and with a message, जी Swamiji, because you Yes, have to go, I know. जी absolutely. So I would say the following things. It's a bunch of messages. Don't compare yourself with others. Compare yourself only with the person you were yesterday. Happiness is not obtained by maximizing our possessions, but by minimizing our attachments. The whole education system is focused on doing things efficiently. That is good, but doing unnecessary things efficiently is not good. So, spirituality will enable us to stand tall without standing on others. And if others are angering us, then they are conquering us. And therefore, to bring out the best within, we should ignore the beast within and think with your sense and not just with your senses. Because fate is not a matter of faith, but our faith matters in determining our fate. And to end our conversation, my message for the youth to empower themselves spiritually is: discipline is the fusion
of intention with action. And when you bring both these together, empowerment happens. Thank you, प्रणाम Swamiji. Looking forward to seeing you at your eco village soon, one day. Thank you. Thank you, Dr. Kiran. Thank you, Senaji. Thank जी you so much for all the wonderful videos which you created. The introductory video was also very thoughtfully put. And then you brought in the video with Radhanath Swami and Bhakti Rasamrit Swami and Srila Prabhupada also so beautifully. Thank you very much for that. जी Thank you. इट्स ऑल मास कृपा जी हरे Hare कृष्णा Hare Krishna. Krishna. जी Hare Best Krishna. wishes. Best थैंक wishes to यू you. Hare Krishna. प्रणाम Hare जी Krishna. जी Thank जी you. जी आप सबका शुक्रिया आपको हम अगले महीने मिलेंगे मम्मी आप कुछ कहेंगे देन आई No, thank you, Beta. Now we look forward to a wonderful next next inspirer. These are यस all iconic inspirers. They're giving you your life's essence of life lessons in just less than an hour. जी I Whole object of this Baatcheet is to continue to inspire our listeners जी and spiritualize our country. जी जी बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. आप हमारे साथ सब जुड़ते हैं इट मेक्स इट सो मच मोर मीनिंगफुल फॉर अस आप सबका जुड़ना हमारी ऑडियंस का जुड़ना हमारे साथ तो ये यात्रा जारी रहेगी अगले महीने आपको फिर मिलेंगे एक और बातचीत के साथ एक प्रयत्न करिए एक प्रयास करिए कि आजकल के समय में भी आप अपनी सोच को बहुत सरल और निर्मल बनाएं फिर रास्ते मिलते जाएंगे जी एक प्रयत्न Thank you. करके देखिए जी Want to thank the entire demonstrative team learning for having done what Swamiji loved. जी Thank you, Shakira and Sujata and Shivani and Saina, all of you on your demonstrative learning channel. जी Thank you. जी And the जय India Vision हमारी माँ Foundation, whose channel we belong to. जी Thank you. जय हमारी माँ सब जय Bye धारी bye. माँ Thank you. मिलेंगे Jai Ma. अगले महीने जय धारी माँ जी